हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। I am Bikramjeet. Welcome to Gyansurf Education Channel. A new initiative, a new start for you, with you. We are starting this journey here from today onwards. This is our first lecture. So we are starting with the basics of geography. We know that geography has three parts as physical, Indian, and the world. And the basics, moreover the basics are in the physical geography. So we are starting with the basics of geography here, and the first chapter today is motions of earth, latitude and longitude. Today we will be dealing with the latitude and longitude. Tomorrow we will be doing the motions of earth and its impact. So let's start with the latitude and longitude. So the first topic is the shape of the earth. आप लोगों ने संतरा देखा है? वो जो संतरे का जो शेप है, ऊपर से फ्लैटेंड, बीच से बल्जीनेस, दैट इज द शेप ऑफ अ अर्थ, एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ. सो इससे पता चलता है दैट अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्पेरिकल. क्यों हम लोग ये बात बोल रहे हैं? क्योंकि हम जब देखते हैं इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ द अर्थ, इट इज़ 12,756 किलोमीटर, whereas the polar diameter is 12,714 kilometers. So there is a difference in between both. So with this we can prove that the equatorial diameter is more than the polar diameter here. That is the reason we say that the earth's shape is not perfectly spherical. It is rather a geoid shape, or we can say it is an oblate spheroid. Why we are saying that it is an oblate spheroid? Reason क्या है इसका? पहला reason है that it is rotation of the earth. हमको पता है that earth rotates from west to east direction, and due to this rotation of the earth there is a centrifugal force applied on it. Centrifugal force क्या करता है? It pushes the matter outward, away from the axis. ये जो एक्सिस आउटवर्ड फोर्स है, जो अर्थ, ये जो आउटवर्ड फोर्स है जो लग रहा है अर्थ को, ड्यू टू दिस it becomes stronger at the equatorial part, stronger at the equatorial part, due to which it becomes bulgy. There is another more reason, that is gravitational force. Second is gravitational force, the first is rotation. Gravitational force क्या करता है? It pulls towards the center of the earth. Everything it pulls towards the center of the earth. जब center of the earth में हम pull करेंगे तो it, due to this bulginess, the gravitational force is weaker at the equatorial part, and it is stronger as compared, it is stronger in the polar regions, in the poles. So we can say, because of these two regions, that the earth is flattened both at the ends of the pole, and it is bulgy at the equatorial region, and this is what we call a geoid shape. So now we are going to the topic latitude and longitude. अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते क्या है? आप लोगों ने ग्लोब देखा है? ग्लोब, वो जो हम लोग के पास होता है, ग्लोब टिल्टेड होता है थोड़ा एक्सिस. अब ग्लोब में हम लोग ग्लोब को क्या करेंगे? सब लेट्स ग्लोब को हम लोग फ्लैट कर देते हैं, फ्लैट.
This is a 2D representation which is known as map. This is a 3D which is a globe. For our convenience we have done a 2D representation. यहाँ पे हम लोग suppose we have to locate a location. This location we have to locate exactly what is the place. जैसे हम लोग किसी को लोकेशन भेजते हैं, अब हम हमारा करंट लोकेशन, या कोई डिलीवरी बॉय आता है, वो कैसे पता चलता है कि कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन है उसका. दिस इज़ हाउ इट इज़ डन. These are coordinates. अब इसको फाइंड करते हैं कैसे. There has to be one horizontal line and there has to be one vertical line. The intersecting point of the horizontal and the vertical line is the coordinates, exact location. अब ये जो horizontal line है इसको हम बोलते हैं latitude, और जो vertical line है उसको हम बोलते हैं longitude. So आपको अब पता चल गया that the horizontal line globe में horizontal जो line होते हैं these are latitudes. These are latitudes. और जो vertical lines होते हैं these are longitudes. These are longitudes. So latitude होते क्या है. हम अगर देखें latitude is the angular distance at the point of the surface of the earth measured in a degree from the center of the earth towards the north and the south direction. मतलब आइए देखते हैं. ये अर्थ को हमने हाफ में डिवाइड कर दिया है. So let's take this as center of the earth. We have said that it is an angular distance. ये 0 डिग्री. अभी सेम हम यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ तक 90. सेम साउथ में 10, 20, 30 जाएगा सीधा 90 तक. ये है नॉर्थ और ये है साउथ. So it is said that it is an angular distance from the center of the earth towards the north and towards the south. यही होता है latitudes. अब ये latitudes को हम एक imaginary line, these are imaginary lines, हाँ. So हम लोग 0 से एक imaginary line खींचेंगे सीधा, 10 से खींचेंगे. These are latitudinal lines which is supposed to be parallel in nature. They are parallel in nature. और ये इक्वल डिस्टेंस इन दो लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 111 किलोमीटर्स. So see. So the next line here we have written that a latitude lines are parallel to the equator as I have shown there.
The distance between the two parallel latitude is about 111 kilometers, we have shown. There are some imaginary lines. As I have said, it is an imaginary line. Latitude, longitude, they are imaginary lines. So the earth, here earth, ये earth है. अर्थ में जो ये 0 डिग्री है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर और द ग्रेट सर्कल. दिस इज और द ग्रेट सर्कल इक्वेटर है, ये ग्रेट सर्कल है. दिस 0 डिग्री डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. Same with the longitude. This is a 0 degree, which is known as prime meridian. Prime meridian. It divides the earth into eastern hemisphere and the western hemisphere. Eastern hemisphere and western hemisphere. So equator हो गया. I mean, the next line is the Tropic of Cancer, which is 23.5 degree north, and the other line is Tropic of Capricorn, which is in the southern part, which is 23.5 degree south. Arctic Circle है जो 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, एंड एंटार्क्टिक सर्कल है जो 66.5 डिग्री साउथ में है, and the north pole and the south pole is 90 degree north and 90 degree south. These are the latitudes. अब बात करते हैं एक चीज, जो अर्थ है अगर सीधा होता अर्थ, तो जो सन है, its rays would have fallen entirely on the earth, and there would be no season. It would be a same season. But our earth is tilted. Our earth is tilted. So the sun is for here the tilted, and this is what is tilted is 23.5 degree. 23.5 degree. The tilted portion is 23.5 degree. So the axis is tilted at 23.5 degree. So in this situation, when it is tilted, the maximum heat or the sun rays falls between the tropics. So the maximum sunlight overhead is always between the tropics. Tropic, not beyond it.
अब हम लॉन्गिट्यूड देखते हैं। लॉन्गिट्यूड्स जो है, दिस आर एंगुलर मेजरमेंट्स फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल कनेक्ट होते हैं। As I have shown in this diagram that the equator नॉर्थ पोल से साउथ पोल कनेक्ट होते हैं यहाँ पे सेम। अब हम अगर लॉन्गिट्यूड्स को अगर एंगुलर डिस्टेंस में देखना चाहते हैं कैसे होते हैं, लेट्स कट द अर्थ इनटू टू हाफ्स। दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस इज 0 डिग्री, this is 10, 20, 30, 40, same to as here 180, same here 10, 20, 30. This will connect from here to the poles, this will connect to the poles, this will connect to the poles, this will connect to the poles. These are not parallels, these are semicircles in nature, semicircle in nature. So the maximum distance of between the two longitude is at the equator, is at the equators, which is about 111.3 kilometers, and the lowest is at the poles, which is 0. तो हम लोग लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस भी बोलते हैं। मेरिडियंस है सेम एज द इमेजिनरी रन which runs vertically from the north to south pole. The distance between the two meridian longitude decreases from the equator to pole, and as I have said, it meets at the pole. 0 हमने बता ही दिया कि it is a prime meridian, it is called prime meridian. Q prime meridian because it passes through the Greenwich, London, at the Royal Astronomical Observatory, which is taken as a reference point from it. एंड ये प्राइम मेरिडियन ही हम लोग डिसाइड करते हैं टाइम। सो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम्स हैज़ अ रिलेशन। जैसे एक अर्थ को राउंड लेने में 24 आवर्स लगते हैं, it rotates 24 hours, 360 degree rotates on its axis. So what we have done is this, जब हम 1 आवर्स को निकालेंगे, 1 आवर के लिए लॉन्गिट्यूड निकालेंगे, तो it comes around 15 degree, it's come around 15 degree. So 1 hour is equal to 15 degree. So it means that when the earth rotates from west to east direction, every 15 degree eastward we will gain an hour, we will gain. चलो एग्जाम्पल देके बता देते हैं। Suppose this is the map. This is the 0 degree. अब यहाँ पे 12 बज रहे हैं नून, 12 नून 12 बज रहे हैं। हमको फाइंड करना है 30 डिग्री ईस्ट, यहाँ ईस्ट है, यहाँ था 15 डिग्री वेस्ट है। जब हम 13 डिग्री ईस्ट में जाएंगे, हमने क्या बोला कि 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। जब हम ईस्टवर्ड पे जाएंगे तो 15 विल बी 1 आवर एंड नेक्स्ट 15 विल बी 1 आवर, दैट मीन्स दैट इट इज़ 2 PM गेन होगा आवर्स। सो 12 बज रहे थे 0 पे हम लोग, ये प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच मीन टाइम। सो 30 डिग्री पे हम लोगों ने क्या फाइंड किया, दैट इट इज़ 2 PM। सो एंड अगेन अगर हम लोग 15 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम हो रहा है वो पता चेक करना है, तो हम क्या करेंगे,
हम जाएंगे वेस्टवर्ड। हम जब वेस्टवर्ड जाएंगे तो 15 डिग्री मीन्स 1 घंटा, दिस इज 11 AM, 11 AM, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। समझ गए कैसे हम टाइम फाइंड आउट करते हैं? ये हो गया। अब हमने अर्थ का जो टाइम जोन है उसको 24 टाइम जोन में डिवाइड किया अर्थ को। क्या होता है कि एवरी सिटी हैज़ इट्स ओन लॉन्गिट्यूड, इंडिविजुअल लॉन्गिट्यूडल पोजिशनर। अब हम उस एवरी सिटी के लॉन्गिट्यूड पोजीशन को अगर देखें तो इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, इट्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड फॉर सबका अलग अलग टाइम निकलेगा। फिर टू मेक कंसाइज कन्वीनियंस फॉर द कन्वीनियंस हमने क्या किया है, कंट्री वाइज हमने एक सेंट्रल मेरिडियन फिक्स किया है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम, विच इज़ अ फिक्स टाइम, फिक्स टाइम फॉर द कंट्री। जो बड़े बड़े कंट्री हैं लाइक USA, कनाडा, रशिया, whose width is very much larger as compared to the others, they have more numbers of time zone. So examples में मैंने शो कर ही दिया है that USA has 6, Canada has 6, Russia has 11 as of now, and France has 12, which is the highest of all. ये जो स्टैंडर्ड टाइम है ये बता ही दिया कि कंट्री to avoid confusions, each country has its own central meridian. So हमारा इंडिया में जो सेंट्रल मेरिडियन है उसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वो हमारा 82.5 डिग्री से क्रॉस होता है, 82.5 डिग्री। सो इसी लाइन, ये जो लाइन है ये एक्चुअली क्रॉस होता है हमारा यूपी, मिर्ज़ापुर, then it crosses Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and Chhattisgarh, Odisha, Andhra Pradesh. It passes through all these states: Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, and the line is 82.5 degree east, which is Indian Standard Time. अब इसको हम GMT से अगर कंपेयर करें तो 82 डिग्री ये हो जाएगा हमारा 5 आवर एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब 5 घंटे प्लस ग्रीनविच मीन टाइम से। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल डेट लाइन। 0 डिग्री के ऑपोजिट एक लाइन है which is 180 डिग्री. It is known as international date line. It crosses through the Pacific Ocean. It crosses through the Pacific Ocean. ये क्या करता है, ये हमारा एक डे ही चेंज कर देता है. Either it loses a day when we cross path across this line, date line. Then a day may be lost, a day may be gained. Suppose a traveler is passing through east to west, he will lose a day. When a passenger is crossing by west to east, he will gain a day. Suppose ये मैंने यहाँ पे शो कर ही रखा है that if this side has 1st January, then this side would be 31st December. So if anyone crosses
from 31st to here he would have gained a day. ये लाइन जो है ये जिगजैग है. क्यों जिगजैग है? बिकॉज लाइन जो स्ट्रेट लाइन अगर होता तो इसके बीच में आइलैंड ग्रुप्स आ जाते हैं. जो आइलैंड ग्रुप अगर एक लैंड मास अगर आ जाता है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अ country to have different day in that. So to manage it we have given a zigzag line here, zigzag line जो water body से ही cross होता है. So it passes through Bering Strait. It passes through Bering Strait here. It is the Bering Strait is here, and it passes through the Bering Strait, and then the Pacific Ocean, Arctic Ocean, Antarctic Ocean, Fiji, Tonga, and some small islands. So with this, we are completing the first chapter, longitude and latitudes. Hope you have liked it. And if you have liked it, do subscribe our channel for more. Thank you.